The role of regard in the relationship with the Sadguru. और सतगुरु के संबंध में रिगार्ड अर्थात सतगुरु की आज्ञा। And the regard in the relationship with the Sadguru means the order of the Sadguru. देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर, After forgetting all the relationships of the body along with the body itself. क्या कहा? What was said? बाप और टीचर से भी ऊंचा स्टेज का संबंध कौन सा है? Which relationship is of a higher stage than even the relationships with the father and the teacher? सतगुरु का। The relationship with the Sadguru. तो बोला देह और देह के सर्व संबंध भूलकर। So it was said, after forgetting all the bodily relationships along with the body itself, देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। to become stable in the form of the soul that lives in the body, meaning to stay in the incorporeal stage like the Sadguru. यह सतगुरु के संबंध का रिगार्ड। This is the respect for the relationship with the Sadguru. सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। Be ever ready to go back home. अब रेडी कब रहेंगे? When will you be ever ready? अंतमते सो गते होगी ना। It will be antamate so gate, won't it? Antamate so gate means, as is the final thought, so will be the destination. तो सारा जीवन अगर आपने को आत्मा ज्योति बिंदु स्टार समझा होगा, If someone considered himself to be a soul, a point of light, a star all his life, तो जब अंत काल आएगा then when it is the end period, तो सहज ही निराकारी बीज रूप बिंदु रूप स्टार रूप निसंकल्पित तेज बन जाएगी। he will easily become incorporeal, the seed form, the point-like form, the star-like form, and have a stage free from thoughts. और उस स्थिति में आनंद से स्थिर हो जाएंगे। And he will joyfully be stabilized in that stage. कोई कठिनाई नहीं होगी। There won't be any difficulty. सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी हो जाएंगे। He will become ever ready to go back home.